Theorem. And who in the world is Pythagoras? Well, in math, a theorem is simply a statement that has been proven to be true from other things that are either known or accepted to be true. And Pythagoras, well, he was this really smart dude who lived a long time ago in ancient Greece, and he proved the theorem. Well, historians aren't completely sure it was actually Pythagoras who proved it. It could have been one of his students or followers, but he usually gets credit for it. Anyway, the main thing that you need to know is that the Pythagorean theorem describes an important geometric relationship between the three sides of a right triangle. We're going to learn what that relationship is in just a minute. But first, there's several things that you'll need to know before you can truly understand the Pythagorean theorem or use it to solve problems. First of all, to understand the Pythagorean theorem, you need to know about angles and triangles. And you also need to know a little bit about exponents and square roots. So if those topics are new to you, be sure to watch our videos about them first. Second, even though the Pythagorean theorem is about geometry, you'll need to know some basic algebra to actually use it. Specifically, you'll need to know about variables and how to solve basic algebraic equations that involve exponents. We cover a lot of those topics in the first 5 videos of our Algebra Basics series. In addition, the Pythagorean theorem is a right triangle with legs A and B and hypotenuse C, a squared plus b squared equals c squared. As you can see from this definition, the Pythagorean Guys, I am going to show you another video first, then we'll come to it. We'll see both the videos. Theorem is by far the most important concept not only in triangles but also in the entire field of mathematics. To understand it, all we need to do is draw a right triangle. It is a triangle in which one angle is a right angle. What's so special about this triangle or this theorem? The first thing we need to understand is what the side opposite to the right angle is called. It's called the hypotenuse. The Pythagoras theorem says that the hypotenuse has a special relation with the other two sides. It tells us that the square of this length, that is the hypotenuse squared, is equal to the sum of the squares of the other two sides. Remember, it holds true only in the case of a right triangle. So the theorem says that for any right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Let's say the lengths of the sides are A, B and C. C is the length of the hypotenuse. For this triangle, we can say that C squared is equal to A squared plus B squared. If this is a right angle triangle, the square of this length will always equal the sum of the squares of each of these lengths. This theorem has innumerable uses, so let's look at one in this video. Zara wanted to build a ramp leading from the ground to the back porch. The porch is 3 feet off the ground, and due to building regulations, the ramp must start 7 feet away from the base of the porch. How long will the ramp be? Sir, 10 feet. No, beta, no. Let's see. The Pythagorean theorem doesn't apply to all triangles. It only applies to right triangles. As you know, right triangles always include one right angle that's usually marked with a square right angle symbol to help you identify it. And you need to know which angle is the right angle because it helps you identify an important side of the triangle called the hypotenuse. The hypotenuse is the longest side of a right triangle, and it's always the side that's opposite of the right angle. In other words, it's the side that doesn't touch or help form the right angle itself. In order to use the Pythagorean theorem, you need to be able to identify the hypotenuse because that's what the variable c stands for in the theorem. C is the length of the hypotenuse side. The other two sides of the triangle, the ones that do touch or form the right angle, are called its legs. Our Pythagorean theorem definition uses the variable names a and b to represent their lengths. Oh, and it doesn't matter which leg is called a and which leg is called b, as long as you keep track of which is which after you make your initial choice. Okay, now that we know the various parts of the Pythagorean theorem, let's think about what the relationship or equation a squared plus b squared equals c squared is really telling us. It's telling us that if we take the lengths of the two legs, sides A and B, and square them, which means multiplying them by themselves,
A squared is A times A, and B squared is B times B. And then, if we add those two squared amounts together, they will equal the amount you'd get if you square the hypotenuse side, which would be C squared, or C times C. That may sound a little confusing at first, so let's take a look at a special example of a right triangle that will help the Pythagorean theorem make a little more sense. This right triangle is called a 3, 4, 5 triangle because its sides have the relative lengths of 3, 4, and 5. And by relative lengths, I mean that the units of length don't really matter. The sides could be expressed in any units, inches, meters, miles, whatever. So the triangle could be of any size as long as its lengths would have the proportions 3, 4, and 5 relative to each other. Starting with the side that's 3 units long, which we'll call side A, what do we get if we square that side? Well, in arithmetic, squaring 3 means multiplying 3 times 3, which equals 9. And the geometric equivalent of squaring something actually results in a square shape. As you can see, this square contains 9 unit squares. So this red area represents the value a squared in the Pythagorean theorem. Next, let's look at the side that's 4 units long, which we'll call side B. Squaring 4 means multiplying 4 times 4, which is 16. Again, the geometric equivalent of that is a literal square that is 4 units on each side and covers a total area of 16 units. So this blue area represents B squared in the Pythagorean theorem. And finally, let's deal with the hypotenuse, or side C, which is the longest side. It's 5 units long. Squaring 5 means multiplying 5 times 5, which is 25. And the geometric equivalent is a 5 by 5 square that has an area of 25 units. So this green area represents C squared in the Pythagorean theorem. Now that you can see how the arithmetic parts of the Pythagorean theorem are related to the geometric parts of this right triangle, let's check to see if the Pythagorean theorem is really true, at least in this special case. On the arithmetic side, if you add up the amounts a squared and b squared, they really do equal c squared because 9 plus 16 equals 25. And with a little rearranging of our unit squares, you can see that the area of the squares formed by the two legs really does equal the area of the square formed by the hypotenuse. Wow, those ancient Greek dudes really were smart. Okay, but I know what some of you are thinking. That's cool and all, but why should I even care about the Pythagorean theorem? What's it good for? Well, as always, that's a good question. And the answer is, like many things in math, the Pythagorean theorem is a useful tool that can help you use what you do know to figure out what you don't know. Specifically, if you have a right triangle, but you only know how long 2 of its sides are, the Pythagorean theorem tells you how to figure out the length of the third unknown side. For example, imagine that you have a right triangle that's 2 centimeters long on this side and 3 centimeters long on this side, but we don't know how long the hypotenuse is. No problemo. The Pythagorean theorem tells us the relationship between all 3 sides of any right triangle, so we can figure it out. We know that a squared plus b squared equals c squared, so let's plug in what we do know into that equation and then solve it for what we don't know. Again, it doesn't matter which of the 2 legs is called a or b, so let's just label them like this and then substitute 2 for a and 3 for b in the Pythagorean theorem equation. That gives us an algebraic equation that has just one. So guys, we'll be solving a lot of questions. If you want to solve this question, I can give you different values. Should I give you different values? Yes, sir. So Sir, the let's number take है it 10 and let's take it 6. Now solve it. You have to Sir, find, 8 and 6. yes, 8 and 6. Now solve it. So Aman, you need to send to Ragini ma'am, guys. Aman will be doing 2-3 classes with us. All right, guys. So c square is equal to 6 square plus 8 square. So c square is equal to 36 plus 64.
So C square is equal to 100. So which means C into C will be equal to 10 into 10, which means C is equal to 10. Understood? Okay, sir. And Aman, you need to send your answer to Ragini ma'am. She checks the answer space. Beta, she helps during the classes. Now there is one more way to write this. Cos, 1 minute. Because C square is equal to 100, so C will be equal to square root of 100. ये जो साइन होता है स्क्वायर रूट होता है, इसका मीनिंग डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश will give you 100. So C will be equal to 10. That will be सर सी तो चूतिया होता है. So guys, मैम एक तो वेटिंग रूम इनेबल कर देना. And Savir, you start your camera. Beta, who said that? सर क्या? So Savir, you tell your friend Davik, beta, if he does it again, I'll report it to his parents. Do we understand that? ओके सर. सर मैंने तो कुछ नहीं किया. नहीं, आपकी साइड से ही वॉइस आई थी और किसी ने तो ज्वाइन किया नहीं मीटिंग में अभी. सर मैं तो अभी पार्क में फुटबॉल खेल रहा था. मैं अभी आया हूँ घर पे. जस्ट अभी वॉइस आई थी. सर You know all these sessions are recorded. I सर can मैंने report नहीं this. किया. सर मैंने Don't you better listen to me and you want to Davik also. मस्ती तक चलता है but this is too much. आपको पता है इंडिविजुअल कैमरा की वॉइस भी मैं निकाल सकता हूँ रिकॉर्डिंग से. सर लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं. नहीं किया तो अच्छी बात है बट जस्ट टेल योर फ्रेंड Davik not to repeat it again. सर ठीक है. So guys, so if I give you C square is equal to 81, what will be my C? Give it in the chat quickly. 1 minute question. So basically you will be finding square root of 81. Excuse me, sir. Yes, Avyan. सर मेरी स्कूल बुक में एक क्वेश्चन था स्क्वायर ऑफ 22. तो बेटा 22 into 22 करना है मल्टीप्लाई. The square root of 22. That beta we cannot find it without teaching you the method. That method is complex for now. Sir, but हमें है like नहीं है बेटा, मुझे आप भेज देना, नहीं होगा आपको. Aman, send your answer. So because 9 into 9 is 81, C equal to 9. Now ये तो easy था. But suppose I give you a number जिसका आपको square root नहीं आता हो. Then how will you do it? So factorization. Yes. Suppose I give you a number, let's say 576. So I tell you C square is equal to 576. ये भी छोटा number ही है. Find C. How will I find? For that, the easiest method to find is prime factorization. What is the method? It's prime factorization. So let's see. So I will divide it by 2. I will get what? 288. Then I will divide it by 2 again. I will get 144. Then I will divide it by 2 again. I will get 72. Then I will divide it by 2 again. I will get 36. Then I will divide by 2. I will get 18. Then I'll divide by 2. I'll get 9. Then once again I'll divide by 3. I will get 3. And then 3 and 1. So this is the prime factorization, right? Everyone is clear with this, correct? There is Yes. no factorization. So after doing the prime factorization, from every pair of a factor, I will take one out with every pair.
2 2s थे 1 बाहर ले लिया, 2 2s थे 1 बाहर ले लिया, 2 2s थे 1, 2 3s थे 1 बाहर ले लिया. Now C will be equal to 2 into 2 into 2 into 3. 2 times 2 times 2 times 3. So C will be equal to 24. This is how we find the square root of a number. Understood? Now, finding square root may not be in your curriculum, but Pythagoras theorem is in your curriculum, and you might, in when you do Pythagoras theorem, there might be a question जहां आपको square root निकालनी पड़े. Understood, guys? So we will do square root. Find me the square root of 784. Square root का साइन ऐसे होता है. Find me the square root of 784. So we have to find the square root of this. Yes. So Amy, Dheeraj, Sunny. Amira, are you confused? Yes, sir, I couldn't get the answer. Beta, did you do the prime factorization? Yes, sir. So you got 392, then 2, 196, then 2, 98, then 2, 49, then 7, and 7, and 7, and 1. So my factors, common factors are this. So it will be 2 into 2 into 7, which is 28. Understood? Yes. So guys, let's say if I give you 600. So is 600 a perfect square? Yes or no? No, sir. No, sir. Then what will happen? Let me show you. So 2, 300. Now we are going a little bit beyond the curriculum. I'm giving you an example. 275, then 5, 15, then 3, 5. So guys, मेरे को एक 2 मिल गया. Correct? एक 5 का पेयर मिल गया. Correct? Yes or no? So it is 2, Yes, sir. 2 into 5 into 5 into 2 into 3. मुझे ये 2 और 3 लोनली रह गए. So 2 into 5 is what? 10. So will we take the three? Beta, let me explain. Let me explain, beta. So 1, 2 and 1, 5 I can take out. 2 into 5 is 10. And अंदर क्या रह जाएगा? 2 into 3, 6.
So this is the square root which is not going to come anywhere. I have just explained you कि अगर perfect square नहीं होगा तो उसकी square root हमारी, this is called an irrational number. हम नहीं निकाल सकते proper square root. You will study about rational and irrational numbers in the coming classes. Okay, understood? So now this, I gave you this concept so that in questions you can find the square root. We'll continue with Pythagoras theorem or Python. Everyone knows about Pythons, guys? Today we are going to study about Pythons. पाइथन क्या होता है? Pythons बेटा snakes के बारे में नहीं पता? Python the snake. तो बस कैसे? वही पढ़ना है हमें. Do this question, guys. Remember, the hypotenuse is always opposite to the right angle. Suppose ये मेरा ये triangle है. And this is the right angle. So hypotenuse will be opposite to it. Will be opposite to it. And hypotenuse is the longest side of the right angle triangle. Preeti, square of the hypotenuse c square is equal to a square plus b square. आपने तो डायरेक्ट माइनस कर दिया. अंडरस्टूड प्रीति? पहले आप स्क्वायर करोगे हाइपोटेन्यूज का, फिर दूसरी साइड का स्क्वायर करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर यू विल सी स्क्वायर रूट निकालोगे. सर तो मतलब 17 का स्क्वायर ढूंढना, 8 का स्क्वायर ढूंढना, फिर माइनस करना और आता रहेगा. Lilwani, how many marks you got in maths? Sir, we haven't been given the marks yet. So see guys, c square means 17 square is equal to 8 square plus the other side can be x or a or b. So x square. So 17 square is 289. This is equal to 64 plus x square. So this will come here, plus will become negative. 289 minus 64 is equal to x square. Or I can write x square is equal to 225. Now 225 is square of 15, so x will be equal to 15. Understood? Aman and Preeti? Yes. So guys, with Pythagoras theorem, we can check also. First, let us do some other question. Okay, example 3. Try this question. After exactly 1 minute, I will show you the diagram. So this question came in my exam.
सो अव्यान उसमें क्लियरली लिखा है बेटा, यू कैन यूज अ कैलकुलेटर। सर नहीं कर सकते ना, हमें अलाउड नहीं है। तो बेटा जब अलाउड नहीं है तो वो कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, वो आएगा ही नहीं। तो बट हमें नोटबुक में से करवाया है। नोटबुक में मैम से पूछो वो क्यों करवाया है उन्होंने, जब मेथड ही नहीं पढ़ाया आपको तो क्यों कराया वो। तो आपका सर मैथ्स एग्जाम कब है? सर मंडे को। सो ये 3 डाउट्स हैं आपके। सर आई थिंक सो और भी है। तो सेंड मी बेटा, आफ्टर द क्लास आई विल टेक। ओके सर। सर वहां तो स्कूल ने बोला था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। मैं तो आपको वही तो बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। मिस्टर वाई प्लस वाई and Mikey the Don. Mr. YY, what's my answer? Oh, I did not show you the diagram. You guys did it. That's great. सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है। तो मेरा आंसर डेसिमल्स में आ रहा है। I will show you beta. So other kids, what I wanted to tell you is this Pythagoras theorem can be used to check also if a triangle is right angle triangle or not. Let's see, मैं आपको दूं 3, 4, 6. You have to check if this triangle is right angled or not. So guys, what is the square of 6? 36। 36. अब अगर ये right angle होगा तो ये hypotenuse होगा. Then this is square of 4 is 16, square of 3 is 9, which is equal to 25. Is 25 equal to 36? No, sir. नो सर। So then it is not a right angle triangle. So similarly, you have to check for the A part and the B part. Okay, so Adve, a 15-meter ladder is placed against a wall such that the ladder is 9 meters away. इस point से ladder 9 meters away. And such a way 15 meter जो ladder की length है that is 15. ये diagram बन गया था अद्वे. यस सर। ओह So सर मैंने गलती कर दी सर, मैंने गलती कर दी थी एक। okay. So सर 15 मेरे square सर मैं minus equal to 9 square plus इसको h मान सकते हैं plus h square. So h square is equal to 15 square minus 9 square. So h square will be equal to 225 minus 81. So which will be what? 144. So h will be equal to 12. Okay. ओके सर। सर मैंने पहले सेम करा बट मुझे लगा मेरा आंसर गलत है, तो मैंने फिर 9 एंड 15 को ऐड कर लिया था। No beta. सर हमें एग्जांपल दो कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करना है ना। Yes, you have to just write yes, yes, no, no, yes, no, no, yes. अगर right triangle है तो yes लिख दो, नहीं है तो no लिख दो.
Preeti Savera, how many marks did you get? So we didn't do मिला that. नहीं Yes. सर What मिला नहीं about you, YY? सर उसे भी नहीं मिला Viru and Sunny both got 79. तो उसकी भी 79 आए हैं. हाँ. All right. So Preeti, Amy, and Lilwani. So just sending. Amy, beta, send your answer. So I didn't get enough time to solve it. आपका first solve हुआ question 1. No, not तो yet. बेटा सी what is 25 square? याद है नहीं है याद? I Guys, it don't. would be helpful अगर आप squares 30 तक याद रख लोगे. तो 25 square is 625. Now, obviously, if this is a right triangle, this will be a hypotenuse. 24 square is 576. 7 square is 49. So when you will add this 24 square plus 7 square, it will be 576 plus 49, which is equal to 625. So yes, because the sum of the squares of the other two sides is equal to the square of the hypotenuse. So yes, it is a right angle triangle. Understood? Why, Dheeraj, Lilwani? Yes, sir. Yes, Yes. sir. इससे पहले हम करेंगे this one. Solve the 25th question. Now in the direction sense chapter है एक जो reasoning में उसमें सारे questions मतलब like a lot of questions will be based on this theorem Pythagoras theorem. It's very important. So I am making the diagram. A man goes 24 meter due east. So 24 meter due east is this. Then 10 meters north. 10 meters north is this. How far is he from the starting position? This is the start. This is the final. So this is his starting position from here. Understood? तो सर हम अगर इसकी पोजीशन निकाल लेंगे तो 24 × 24 प्लस 100 करेंगे ना हम. यस बेटा. फिर उसका स्क्वायर रूट भी करोगे. सर मैं स्क्वायर रूट 240 आया.
नहीं बेटा 240 नहीं आए। तो मैं स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा। चलो देखते हैं। विरांश, if you are there, So can start you your give a camera. break? So see, what is 24 square? 24 square is 576. What is 10 square? 10 square is 676. देखो guys, अगर आपको याद नहीं है, लेट्स से स्क्वायर रूट निकालना आपको नहीं आता, तो यू कैन सी 25 स्क्वायर जो होता है 625 होता है, तो ये 26 का स्क्वायर होगा, बिकॉज 26 इंटू 26 6 36 होता है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो वी हैव अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी ये किसका स्क्वायर होगा, 26 का। करेक्ट। अब निकालना है तो वी कैन फाइंड इट आउट ऑल्सो। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 338, देन we have what, 169, then 169 is 13 into 13, so 13 ones are, so square root will be 1 2 and 113, so 2 into 13 square root will be of 676 will be what, 26. So c square equal to, this is how we will write, 24 square plus 10 square, so c square is equal to 576 plus 100. C square is equal to 676. C will be equal to 26 meters. So Mikey, YY, Aman, Amy, have we understood? Sure. Yes or no? Yes, sir. Okay. So can you give a break? Why, beta? Today we started late. Yes, sir. 2 minutes. Okay, Yes, guys, yes. take a 2-3 minutes break. Solve the fourth question. I will show you the diagram in a minute. सो मेरे को वो ही दिखाई जा रहा है दैट मैथ्स मिस्ट्री इज शेयरिंग द स्क्रीन ब्लैक से ऐसा कुछ ऐसे कुछ। आपने स्क्रीन को दूसरे पे टर्न कर लिया करो, कर लिया होगा, मतलब आपने टर्न कर लिया होगा दूसरे पे स्क्रीन को। कई बार जूम में आप दूसरी जगह क्लिक कर लो ना, यू आर नॉट देन एबल टू कम बैक। ऑप्शन देख लो, अगर आपको मिल जाए ठीक है, वरना आप रीज्वाइन कर लो। सो मैं यूज कर लेता हूँ। I'm not able to understand. Pritesh, start your camera. यस सर अब ठीक है। I am showing you the diagram, guys. This is the diagram. So पहले लेडर को हमने एक वॉल पे रखा था, so it reached a window 8 meters above ground. Then we kept keeping its foot same, we turned the ladder on the other side, so we reached a height of 15.
You have to find the width of the street, means you have to find this length. Hint is you have to use the Pythagoras theorem 2 times, not just 2 times. मेरे को समझ नहीं आ रहा करना कैसे है। बेटा पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, AC फाइंड करो, कर लोगे? ओके। फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ एंड CB फाइंड करो, फिर विड्थ के लिए दोनों को ऐड कर दो। अच्छा ओके। डायग्राम समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना। ठीक है। स्क्वायर रूट तो बेटा जब ट्राइंगल में निकालोगे तब निकालोगे ना स्क्वायर रूट, तो जब एक बार AC आ जाएगा वो स्क्वायर रूट करके ही आएगा। ये डायग्राम समझ में आया फर्स्ट ऑफ ऑल और नहीं आया? क्या आई कैन एक्सप्लेन द डायग्राम, नहीं आया हो तो। तो इसके बाद एक अव्यान का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई ऑलवेज लाइक दिस क्वेश्चन तो टू मच। 17 इंटू 17 करके प्लस करना है 8 इंटू 8 नहीं बेटा, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल का शॉर्ट फॉर्म, ये आप स्कूल के ICSE CBSE एग्जाम में किसी भी एग्जाम में लिख सकते हो। ADC, दिस इज हाउ वी राइट इट। DC स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ DC इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये बात समझ में आई गाइस? यस। So DC square is 17 square, AD square is 8 square plus AC square को मैं मान लेता हूँ A plus A square, correct? So A square is equal to 17 square minus 8 square. So A square is equal to 289 minus 64. So A square is equal to 225. A is equal to 15. ये समझ आया नहीं आया guys? Now same way in triangle CBE. फिर एक बार मैं ट्रायंगल सॉल्व करने का। कर लो, दूसरे ट्राइंगल का कर लो, then add and give the answer। कर लो गाइस। मैम कैन यू चेक? So CE square is equal to CB square सर plus 20
meters. b square. I am solving. 17 square is equal to CB को मैं I can take it b square plus 15 square. B square is equal to, this is 289, this is 225. 289 minus 225. B square is equal to 64. B is equal to 8 meters. Now your width of the road is A plus B, that is equal to 15 plus 8, that is equal to 23 meters. सर मैं So पिछली let's बार say में इसलिए 23 भेज रहा हूँ Yeah? सर मैंने तो यही भेजा है तो मैंने भी 23 बाद में भेज दिया था। सर मैंने भी तो 23 पहले मैंने गलती से Till I 30 also भेज said दिया था, 23. टाइपिंग एरर था वो। तो मैम ने गलत मार्क कर दिया होगा गाइस, मैम ने गलत मार्क कर दिया होगा. Fine. So can we go ahead? Yes. चलो ठीक है, it's better that you guys got it right. All right guys, मैं इसका डायग्राम आफ्टर 1 minute दिखा दूँ. First try to make the diagram on your own. So you have Lilwani, to do sixth question, right? yes. Lilwani, have you done the gone through the past recording? Yes, sir. Sir, I went through half of it. Okay. Good, Lilwani. सर कौन सा एग्जांपल करना है? Sixth example. Should I show the diagram now? Yes, sir. हैं? सर फाइंड का करना है सर एक सेकंड हमें So see guys, सर समझा दो। नहीं समझ सर आया कर two लूंगा poles of 9 meter and 14. ये 9 है and this is of 14. ये पूरा 14 है. Stand on a plane. If the distance between their feet, उनके feet के distance, ये दूसरा पोल था मेरा, उनके feet में distance है 12 meter. Find the distance between their tops. Means we have to find the distance between B and D. After 1 more minute, I will give you more hints. अभी पहले खुद try करो. सर एक मिनट शायद से समझ आ गया एक मिनट सर Don't cry, don't cry. It's okay to make mistakes. हंसी आ गई थी प्रीतिश ये बताओ, आप डिस्कनेक्ट हुए उसी वक्त दैविक ने आपके नेम से कैसे ज्वाइन कर लिया? How did he come to know that you got disconnected? सर आई डोंट नो पहले से ट्राई कर रहा होगा या तो मेरे को क्या कर रहा होगा? पहले से ट्राई कर रहा होगा मेरे को नहीं पता नहीं बेटा, आपके नेम से उसी वक्त उसने ज्वाइन किया, वरना तो मैंने अलाउ ही नहीं किया. He joined by विरांश नेम, आदित्य नेम, मैंने सबको वो कर दिया. सर आई डोंट नो मैंने नहीं कुछ बोला उसको मैंने चैट देख मे बी यू और सवेरा, आई वन डोंट आउट नो ऑफ. आपने चैट देखो उसके बाद मैंने सर उसको मैं तो घर पे ही नहीं था नहीं, अभी जस्ट अभी ऐसा हुआ, लाइक व्हेन ही गॉट डिस, यानी सेड ना कि आई एम रीजॉइनिंग. यस सर Devik also joined by the same name, Pritish. सर हमें एक सेकंड ये जो आपने डॉटेड लाइन रेड से मार्क करी है उसकी डिस्टेंस ढूंढनी है Yes, beta, because that is the distance between their tops. चलो, time for another hint. सर नो सर नहीं सर एक मिनट See guys, because ये rectangle बन गया, तो ये लेंथ हो जाएगी 12, ये लेंथ हो जाएगी 9,
तो अगर ये 9 हो गई तो बची हुई हो जाएगी 5। ME and YY and Aman, you can try again. You know, Sir, I don't know the answer. बेटा, can you apply Pythagoras theorem to this triangle? Can you apply? मुझे बताओ अद्वै, Yes, sir. कैसे अप्लाई करोगे मुझे बताओ। सर हम सर हम 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यस, 12 स्क्वायर क्या होगा? इसको मैं सी सर लिख देता हूँ। सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज 12 स्क्वायर? सर बेटा म्यूट अनम्यूट नहीं करो ना, मुझे 12 का स्क्वायर बता दो भाई। सर 144। 144। यू कैन सेंड अमायरा। व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25। 25। तो सी स्क्वायर कितना हो गया टोटल? बेटा म्यूट अनम्यूट गेम नहीं खेलो प्लीज। सर 144 प्लस 25 तो 15। 169 नाउ, तो सी कितना होगा? 13। 13। डोंट से आई डेंट अंडरस्टैंड, ट्राई हार्ड। अमन अंडरस्टूड? So guys, there is one interesting question in Avyan's book that I like a lot. This question I somehow like a lot. So this is like a very good concept to, understand. Can we do that? Sir, can we do that in the next Yes, sir. class? Please, next class. Hello guys, everyone can leave. Aman, you stay, and Avyan and Dheeraj, you stay. Bye. Amaira, आप भी stay कर लो if you want to. bye, sir. So Dheeraj, you will send this answer to me, ठीक है? सर अभी सिर्फ ए पार्ट का दूं? या एक एक करके दे दो। सर आई सेंड इट फॉर ए पार्ट। Yes. सो अव्यान, जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम हो ना उसका आप आंसर नहीं देना, मैं एक्सप्लेन। ओके। माइकी स्पीक कर दो फर्स्ट आंसर। तो 4/9, करेक्ट। 4/7। ए ए सो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट करते जाओ, एक एक करके देते जाओ आंसर। तो मेरे को नेक्स्ट का आता है बट मेरे को लाइक समझ नहीं आया। तो पहले मैं अमन को बी पार्ट एक्सप्लेन कर दूं। सी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट टाइम। अब इन्होंने देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, फ्रैक्शन ऑफ द होल और फ्रैक्शन ऑफ पार्ट टाइम। अगर फ्रैक्शन ऑफ पार्ट टाइम पूछे तो 3/7 आर मेन, 4/7 आर फीमेल्स। ये पूछा है उन्होंने। फ्रैक्शन ऑफ द होल नहीं। जैसे आपकी क्लास में दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप 1 है जिसका लीडर है माइकी, एक ग्रुप 2 है जिसका लीडर है धीरज। तो इसका फ्रैक्शन अलग आएगा, इसका फ्रैक्शन अलग आएगा, और फ्रैक्शन ऑफ द होल क्लास अलग आएगा। तो यहां पे उन्होंने पूछा है
fraction of the part time. So it will be 4/7. Understood, guys? Understood? Sir, I've given you all the answers. Okay, now next. Can I leave? Yes, Dheeraj, you can leave. Bye. Bye, sir. Dheeraj, Avyan, when are your exams getting over? The 27th Friday. Oh my God. चलो next C part में what fraction of the staff member employed are part time? So Dheeraj, please send me your timetable. Okay? Timetable for? अरे स्कूल एग्जाम का. Okay. नेक्स्ट C का क्या आंसर है अव्यान? So it is 3/7 into 5/9. आपको सर समझ सिर्फ नहीं आया अपनी ये कैसे हुआ? सर सिर्फ अपनी क्लास का भेजूं या फिर फुल स्कूल? आपकी क्लास का बेटा. So C fraction of the staff are men employed part time. C part. अब ये उन्होंने पूछा है फ्रैक्शन ऑफ द स्टाफ. तो मेन कितने हैं? 4/7 ऑफ 5/9. सो हाउ? सो 5/9 टाइम्स 4/7, क्योंकि इन्होंने फ्रैक्शन ऑफ द होल स्टाफ पूछा है. 3/7 है, सॉरी यार, 3/7. सो इट विल बी 5/21. ये बात समझ में आई? नहीं सर, लाइक हमने होल स्टाफ के लिए 5/9 ऑफ क्यों किया? बिकॉज बेटा पहले ये जो फ्रैक्शन है ना 3/7, ये पार्ट टाइम का फ्रैक्शन है. जैसे मैं बोलूं कि इसका फ्रैक्शन 3/7 है और इसका फ्रैक्शन है 2/3. तो होल का फ्रैक्शन क्या होगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे मैं बोलूं माइकी की ग्रुप 2/3, माइकी के ग्रुप का फ्रैक्शन है 2/3, धीरज के ग्रुप का है 1/3. ये समझ में आ गया? अब माइकी की ग्रुप में मेल्स का फ्रैक्शन है 3/7. तो मैं पूछ रहा हूँ पूरी क्लास में जो मेल्स हैं उनका क्या फ्रैक्शन होगा, जो माइकी की ग्रुप के मेल्स हैं? तो आप क्या करोगे? 3/7 इंटू 2/3. यस सर. ठीक है, तो ऐसे ही डी पार्ट में जो डी पार्ट में भी सेम होगा. गॉट इट? यस सर. Emmy and Amira, if you have understood, you can leave, guys. Yes, it's 20/63. ओके सर, थैंक यू. Yeah, Avyan, you stay more for a minute. आपका एक क्वेश्चन और था, यस सर. ये वाला. इसमें क्या प्रॉब्लम है? Aman, if you want, you can leave. This is an easy question. Yes, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पूरे सबका 2.4 चाहिए, करेक्ट? यस सर. तो 2.4 कैसे आएगा? या तो आप 0.4 को डिवाइड कर दो. जब मैंने लाइक 0.08 को 2.4 से डिवाइड किया तो पता नहीं, मैं तो कुछ और ही आ रहा था. 2.4 को 0.08 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है. यस सर. कैसे डिवाइड करते हैं? इसको 100 से करो, इसको 100 से करो, तो आ जाएगा 240/8 विच इज 30. ओके सर. एक और इजी मेथड बताता हूँ. 8 3 24 होता है, तो जितने 3 वाले नंबर्स हो उनको मल्टीप्लाई कर लो. जैसे 12 इंटू 2 24 होता है. अब यहाँ पे 12 आएगा या 1.2 आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो. 1.2. यस, समझ आया? यस सर. बाय बाय, एंजॉय, गुड नाइट. कोई और डाउट हो कल भेज देना मुझे. ओके? यस सर. बाय सर.